Erickson's theory, the achievement of integrity is primary task of. Correct answer is D. Late adulthood. According to Piaget, cognitive development occurs through a fixed sequence of stages, each distinguished from the previous stages by a. Correct answer is B. New kind of scheme. हर किस्म में एक न्यू स्कीम होती है. Which of the following is not associated with smoking during pregnancy? प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग किस चीज़ से मुंसलिक नहीं है? Correct answer is D. Visual defects. Piaget is a cognitive development as Kohlberg is to dash development. Correct answer is C. Moral. It is a moral development. The two members of a gene pair are called dash. Correct answer is A. Alleles. जीन के दो members को हम alleles कहते हैं. Which theory of gender typing suggests that people understanding and classify their own behavior and personality trait in terms of masculine and feminine categories? Correct answer is D. Gender schema theory. जेंडर स्कीमा थ्योरी के ज़रिए दो पार्ट्स में उसको बिहेवियर के लिहाज से क्लासीफाई किया जाता है. जेंडर आइडेंटिटी रेफर्स टू. करेक्ट आंसर इज बी. द सेंस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल. जेंडर आइडेंटिटी रेफर करती है कि कोई भी पर्सन जो है वो मेल है या फीमेल है. Erickson suggested that children were a very secure attachment to their parents are especially likely to experience. Erickson ने हमें सुजेस्ट किया कि बच्चों का वालिदैन के साथ एक बड़ा ही सिक्योर किस्म की अटैचमेंट होती है और especially likely to experience किसको एक्सपीरियंस करते हैं. करेक्ट आंसर इज C. बेसिक ट्रस्ट को. Which parenting style usually produces children with the greatest confidence and self-esteem? कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पैदा करता है? करेक्ट आंसर इज C. अथॉरिटेटिव स्टाइल. अथॉरिटेटिव स्टाइल बच्चों में कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पैदा करता है. In developmental psychology, the term nature refers to dash factors that influence development. Correct answer is C. Biological. Two individuals who developed from one zygote are known as. दो individuals जो एक zygote से develop हुए हों उन्हें हम कहते हैं. Correct answer is D. B and C. Homozygous twins or identical twins. And the powerful survival impulse that lead human infant to seek a closeness to their parents is called. Correct answer is A. Attachment. Powerful survival impulse जो कि बच्चों को वालिदैन के करीब करती है उसको हम attachment कहते हैं. Who emphasize that social development continue throughout life? किसने emphasize किया कि जो सोशल डेवलपमेंट है वो पूरी ज़िंदगी जारी रहती है. नॉट जस्ट फॉर 5 और 6 ईयर, सिर्फ 5 या 6 साल नहीं बल्कि ये जो सोशल डेवलपमेंट है ये पूरी ज़िंदगी जारी रहती है. करेक्ट आंसर इज C. एरिक्सन ने ये जो एम्फिसाइज किया था. A child is creating new schemata to account for a new information. Piaget calls this process. Correct answer is A. Accommodation. It is called a accommodation process. The union of an egg and sperm produce. Egg और sperm के combination से कि मिलाप से बनता है. Correct answer is B. Zygote.